Okay, so today we are going to discuss about the Docker concept. Okay, I already uploaded one video regarding this, but still some concept is remaining. So I want to cover those concepts in this video. So it is very important, guys, interview point of view. And if you are looking, as a Java developer or senior developer, senior software engineer or technical lead, you must have knowledge about this Docker related concept. Okay. It is very important latest concept. So let's start what we are going to discuss. So these are the remaining topics, guys, inside the Docker. Okay, and the most of the topic I already covered in my previous video, so you can go through that video. Yeah. So in this concept, we will cover what is Docker desktop, what is Docker hub. Okay, Docker CLI use, command line interface use, Docker command use. You can say we have a some command docker command, so I will show you how we can use docker image, how we can create the docker image, how we can run the docker image. Okay, and we can retrieve the container list also, and some local operation on CLI command line interface like start, stop, docker container use. We will use some more command, docker command, and after that we will show you the docker hub, how we can log in through the command line interface, and try to find out the image ID. We will tag the image and we will push the image, okay, on Docker Hub. Fine. So guys, the difference between, somebody may ask, what is the difference between Docker Desktop and Docker Hub? So Docker Desktop, guys, I will show you the interface. This is the interface of Docker Desktop. Okay. So you have to install this Docker Desktop. Okay. So you just go through the on Google, and here you can type Docker Desktop or window, desktop or window, or download, you can say. So you just open. This is for window. Okay, you can check. Okay, so in this way you can choose your corresponding software for Docker Desktop. So once you install, remember I already installed. So what you to do, you this Docker Desktop is the combination of you know this Docker CLI command line interface, okay, as well as Docker daemon. Remember, so Docker daemon, in the previous video told I already discussed about the Docker daemon. So basically Docker daemon, you can say the Docker is communicating to Docker daemon to perform some operation. Okay, so user or developer, they interact with the Docker, and whenever Docker want to perform any operation, so Docker has to communicate with Docker daemon. You can see it's core functionality of the Docker. Okay, so Docker Desktop, why guys, it's kind of local environment, okay, where you can manage your container, you can manage your images, Docker images, you can start your Docker images, you can you know you can run your Docker container, you can say. Okay, and you can create, so create your container, create your Docker images, so easily, guys, you can create. Okay, so now if you see in the image section, we have two images. Okay, image name, this is repository name, is core Java underscore demo Java, demo Java. Okay, now container,
we have a three container. Okay, so basically you can uh, you know manage container images locally. Remember, this is for individual purpose. Whenever developer they create the image, docker image, okay, and that docker image will be visible on your docker desktop. Okay, and when you start your image, so docker container will be created, remember, for running that docker image, so that locally actually we are managing in our uh, you can say in our local system. Okay, so developer is managing locally this. Now it's just GUI, you can say, where we are managing our docker images container. Okay, docker container, we are starting and running the images. Now docker hub, it's kind of, you can say, uh, it's just, you can say, warehouse, you can say it's just storage. Okay, and where we can share our docker images globally, or you can publish your docker images globally, so anyone can utilize those images for their purpose. Okay, so docker hub, you can say, just kind of cloud warehouse. Okay, and docker desktop, it's kind of factory. Okay, where we can create our images, we can start, stop. Can you see here? I will show you here. See, you can start, just a minute, you just go to the image. Can you see? You can run the image. Okay, and container, you can start the container, any container developer. Okay, so image, uh, a single image you can run on multiple container. I will show you. Okay, single image we can run with multiple container. Okay, I will show you through command. And basically we are managing images container here. It's a GUI, remember. Also you can check the logs. You can check the logs section is there, remember. If you start any container, like if you run any container, let me show you here. Let me start this. Say it's starting, it's taking time. So we are starting the container one. See, now the container one is being started. So through this Docker desktop also we can start the container, we can stop the container, we can delete the container. Can you see now it is in? You can see here it is in running mode. See, stop. We can stop and it is. I think it is in running. So now my container is running. Can you see? Okay, and the image is demo Java. It is this one. You can stop also. And now if you go to the logs, see now it's showing in the logs that container one. So my application is going to start here. Application is starting, remember. Can you see? So here you can check the console of your application.
application, when the application is starting, you can check the console. If any error is coming, you can check the logs. Got it? So fine. Now I will stop this. Got it? Now fine. So Docker Hub, I will show you here what is the Docker Hub. This is my Docker Hub. Remember, guys, you have to create the uh, like username password. You have to log in. So you have to create the username password. Okay, you have to register and you have to create, you have to log in. Now this is my Docker Hub. You can see in the Docker Hub you have to create the repository. Under the repository you can push and push your images, Docker images, and you can pull from you can pull the images from the repository. So see here I have created the two repository inside my repository section. You can create the repository, okay, like how we were creating the repository on GitHub. Okay, so inside the GitHub also we were creating the repository, like you know feature branch. Okay, and from there you were pulling the code to your local repository, and you made the changes. We were making the changes on the locally, and after commit changes we were pushing those changes on our repository. Same thing you can do. You like create the images from your application, from your Java application. Just create the image for your Java application, okay, and that image you can push to your remote repository, which is Docker Hub, you can say. And this is the Docker Hub where uh, we can get some other images also. It's, you can say, it's a global repository where other user also they push their images. Okay, we can uh, pull those images also. So people, if they want to share their image, they can share on Docker Hub, remember. Okay, so and from there, from the Docker Hub, they can pull on which they want to work. Got it? Fine. And Docker images, Docker container, these all guys I already covered on my previous sessions. So just go through. Okay. So this was the fine. So we completed what is Docker, desktop, Docker Hub, not Docker CLI use. Okay. So I want to I want to create the Docker image for this application. But remember, before creating the Docker image, there are some process that we have to follow. The first process, remember what? We have to build this application. So this is the first step. We have to build this application. Okay, and you can say we get the executable jar for executable jar file corresponding our application, and then we create the Docker file, and Docker file contain the some instruction. Okay, and these instruction will be followed while creating the Docker image. Remember, so Docker will follow these instruction while creating the Docker image. So whatever instruction you put there inside the Docker file, they will the Docker uh, they will read this instruction, and they will create the Docker image corresponding to this Docker file. And that Docker image you can start, you can uh, start image with the help of Docker container, and then you can push that image to your Docker. Got it? Fine. So me I need to go to this uh, project location. So what is the project location? T/demo Java. So executable jar file we have to check here.
Is there executable jar file inside the lib folder? Since it is related to the Gradle, we are not using here Maven. Okay, so when you go for Maven, then we will go for target folder. But here we have to, in case of Gradle, like we are using the Gradle tool to build this, you can say, Java application. So inside the build folder, we'll go to the lib. Inside the lib, there is no jar file executable there. So we will create the executable jar file for my Java application first. So let me to this whole location. This is my tab of Java, and I will open this. You can say Docker command line interface. You can say fine. So now once you install this Docker, you have to check Docker version. Okay, it will show you the Docker version. Yes, it means your Docker has been installed in your PC. Okay, now Docker images. You see how many images is there? Yes, can you see two images is there on my Docker desktop? Demo Java latest, this one. Let me show you images, demo Java and core Java underscore demo Java. Can you see? So two images there on my Docker desktop. You can say locally. It is locally, remember. So here developer using this Docker desktop to manage the images and Docker container locally. Okay, and globally we can share our images on Docker. So yeah, can you see demo Java latest is the tag name. Okay, and this is core Java underscore demo Java tag name. Okay, now, and the advantage of images, guys, like we can, like, instead of sharing our applications code, which might have, you can say, uh, large size, our applications code might have large size. Okay, like if you share the jar file, or our complete applications code to the other developer or to other location, so size wise if you check, it would have large size. But in case of Docker image, the size will be very less. Can you see? Content size is 85.9 and disk is uses 23. Can you see? This is the advantage of Docker images also. Okay, and now this is the Docker image ID. Fine. Now I will show you another. You'll see Docker container. So let's see PS. If there is any container is running, it will show you the running container. No running container. Can you see? Go to here. There is no running container. All container are stopped. Okay, so you can start. I will start this Docker start. Take the container ID only. Just you need the container ID. Just a minute. Take the container ID space. Let's see. Can you see? It's not been. I think which one?
no such container. Maybe we have copied the wrong ID. Okay, so let me we are going to start this one. Docker start. See here. See, yes. Actually, my system is hanging. So can you see this container has been started? Okay, now if you want to start one more container, so let's see, this is we will copy this one, copied. Now paste. See, I'm trying to start this container. This second one here. So I need to refresh. Just taking, my net is little slow. I think that's why. Yeah, so two container has been started. Can you see? Okay, now if I use here Docker PS, so it will give the those container detail which are running. It will show you Docker PS the two container detail which are running. Can you see here? If you see D77 and 217, can you see? And not giving this third one. Okay, but still if you want to know the all container, so Docker PS here, it will give the complete all container list. So now it's coming the all container list. Can you see? All container, three container list. First, this is, you can say 3CV. The second one this one, third one this. Okay. Now you can stop. Docker stop. Which container? You can stop this container. Paste. Now we will see. Trying to stop first one. Now see it's stop now. So in this way, guys, we can start stop the container. Okay, and like I can create the container for this. I can delete the container also. Okay, let's say I have deleted the container. I will stop here from Docker desktop.
Stop now. Okay. Now I will delete. I have deleted one container. Okay, so now I will create the container for my image. Okay, let's say this is my image demo Java. So I will create Docker, create let me Docker create demo Java Docker start demo Java. Okay, okay, create container 2. Okay, just a minute, let me use the Docker help. So you just a minute. So this is help tag. You can see. So here guys you can utilize these all commands. This one. Okay, so I will use Docker run. You can say Docker run demo Java. Okay, this is my image name. Let's see. I was having how many container? You can say two container because one I deleted. So can you see this? They have created this one, this container Docker run, and they are actually trying to run this image. If you look at this image, they are running this demo Java image. Okay, and for that running image, because they cannot run image without container, this image will be run on containers. For that they created the container, this container, can you see? Wait for me. And this container image name was demo Java. So they are created for us. Can you see this? Still running. Process running for 35 something. Okay, we can go for logs. This one, the container one. What container? Yeah, this one. This is running actually. You see,
running still. जो हमारे जावा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में होता था ना, वो सारी चीज़ यहाँ रन कर रही है, देखो आप। दिस वन स्वीट, दिस वन, ये जो आया है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ये वाला माई कंटेनर नेम started. Okay, so it's taking time, guys. It takes time. So it's still it is running, guys. So let me the container. Let me stop from Docker desktop. I will stop from here. So basically, what I wanted to tell you, like uh, when you run your image, for running that image, what they do, they if container is already there for running the image, if not there, they create the new container. Okay, so this one I use, actually you can see this one, you see what command we use. So when you run your image, okay, if image is not, because you cannot image docker image, you cannot run the docker image without docker container. So it creates the docker container, and under the docker container that image will run. So can you see, we use this command, which one, create and run a new container from an image. Remember, new container उसने बना दिया था यहाँ पे, ये बना दो. Okay, and for the same image you can create the multiple container. Remember, for the same image, let's say I will create another one. I will show you docker start one or more stop container. So create a new container, remember. Okay, so you can create a new container, docker create. So let me show you here. Docker create and container 2. Locally. Okay, so okay, got it. What I will do, I will create the, okay, container. See how many containers there is. I'm going to create the container for this image. You can create the multiple container for the same image, remember. So docker image is like as a, class. For class we can create the multiple object, multiple instance for the same class. Okay, in the same way, if you have a docker image, for the same docker image you can create the multiple container where your docker image will be running. So that's a docker create, and you have to give the image name demo java. Okay, so let's say container, it create the you can say how many containers, there 3 container. Okay, so I'm going to create the another container with the help of image. So see, docker create demo java. So another container has been created now. See, another container. Okay, remember, I will create those container 2.
See, now container 2 images has been created. Can you see here? See, what is the name? Container 2 demo Java, image name demo Java. ओके, और यहाँ पर आप देखोगे ये वाला इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो कंटेनर ये तो इमेज है। ठीक है, इमेज में अब मैं यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर another image. Okay, fine. Now this is my container, and for the same image, guys, I have created multiple container. Okay, now I want to start container. Which container, whichever container you want to start. ठीक है, सपोज ये वाला आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और मैंने बता दिया था यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कंटेनर आईडी लो और यहाँ से डॉकर स्टार्ट कंटेनर आईडी डालो, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइन, नाउ अनदर command, guys, I will show you. Let me, what other things is remaining? This one, this one, this one, this one. Start, stop. This we have already done. Some more docker command, जैसे मैंने अभी बोला यहाँ पर docker कौन कौन सी command, there are many command, guys, you can use. जैसे आप किल कर सकते हो one or more running container। ठीक है, और इसके बाद आप कोड एक्सपोर्ट कर सकते हो, पोल पुश कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, बिल्ड एन इमेज फ्रॉम ए डॉक्टर फाइल। इसके बाद आप इमेजेस नंबर लॉगिन। ठीक है, देखो अभी डॉकर लॉगिन में करूंगा तो क्या होगा, देखो यू विल यूज माय क्रेडेंशियल वगैरह ऑथेंटिकेटेड विद एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल, दिस इज माय यूजर नेम एंड so login succeeded. Okay, now I will create the docker image for this application. Just assume this is your application now, Java application. You want to create the docker image for this Java application, and then you want to push that image to your docker hub. Okay, so now go to this application location, d demo Java there, and now it is there. So first you have to build your application, because once you build your application you will get the executable jar file. Okay, and that executable jar file, you can say it's a containing the dot class file, it's comprising the all dot class file of your application. Okay, so your file होती है dot class file java के अंदर। तो let's see what is the source. It is yes, so first we have to build build our application. So demo java application I am going to build, guys। तो ये आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप ये बिल्ड योर एप्लीकेशन। तो ये ग्रेडल में है एक्चुअली, तो हमारा जो बिल्डिंग टूल है ग्रेडल है। अगर मार्विन होता तो एपीएन क्लिक इंस्टॉल हो जाता। ठीक है, लेट्स सी। सो वी आर गोइंग टू बिल्ड। तो बिल्ड के बाद आप बिल्ड के अंदर जाओगे, आपके लिप फोल्डर के अंदर आपको अभी बन जाएगा, वो आएगा बिल्ड सक्सेसफुल होगा तो लिप फोल्डर के अंदर आपकी
जार फाइल आ जाएगी स्नैपशॉट। स्टार्ट। सो डॉकर डेमन गाइस, रिमेंबर यहाँ पर जो डॉकर है वो इट्स लाइक user or developer they communicate to Docker with the help of Docker CLI or Docker desktop. Now the Docker has to perform the operation, so Docker communicate to the Docker daemon. So it's core functionality of the Docker which perform the operation. जो भी आप query दोगे command line से Docker daemon will execute. Okay, so now our application is building. Remember here, we take some time. तो बिल्डिंग एप्लीकेशन में क्या होता है हमारा, आपको मालूम है, कंपाइलेशन होता है, फिर टेस्टिंग होती है, सारी चीज़ें, डिपेंडेंसीज होती हैं, उनको डाउनलोड होती हैं, ठीक है, सारी करके उनको एक फिर जार फाइल के अंदर कंप्रेस करके डॉट जार फाइल बना देते हैं। हम पहले उसको डिप्लॉय करते थे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर कॉन्फ़िगरेशन इशू है, एनवायरनमेंट इशू है अदर लोकेशन पर, तो वो हमारा एप्लीकेशन वहाँ पर रन नहीं हो पाती, इसलिए हम डॉकर इमेज बनाते हैं। ये देखो बन रहा है, देखो आप सारे। Now the test completed, compilation, test, जो भी डिपेंडेंसी जार फाइल होगी, डिपेंडेंसी ऑल डिपेंडेंसी विल be downloaded. So it is taking some time, guys. Now build successful. Can you see? It is showing the build successful. Okay. Now it means that my executable jar file has been created. So it will go. This is my executable. So this jar file you can share. Okay. So corresponding this jar file, we will create the Docker image. Remember. Okay. So we'll move to this application part, and we have to create the, after building the application, we will create the Docker file. So just I am putting some general instruction you can put based on your project. Okay, so the project will have the Docker file, those instruction you can put here, project related Docker file instruction you can put here. Okay, and based on this instruction that Docker will create the Docker image. Okay, it's already there. See, we are extending image from this, my base image you can say, and this is, I want that set the working directory inside the container. This is the working directory I am setting. Now copy the this jar file, okay, to app.jar file कंटेनर के अंदर रखो आप, app.jar file की इसका कॉपी करो, इसमें app इसको कंटेनर के अंदर रख दो, ठीक है। और जो भी मेरी एप्लीकेशन पूर्ण एप्लीकेशन विल रन ऑन 809 these are the entry file. Okay, fine. Now I will create the Docker image. So first build the application, second create the Docker file. आप देखो ये रिपोजिटरी में आएगा रूट में, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा, नो
Docker build we have to use here, like show you. Yeah, this one you can use, but better you can create the first. You can build the image first. This is the Docker build. Okay, and I will give the image name here. Demo Java. You can give that. Demo underscore Java. Demo Java 1. You can give Java 1. Okay, let's see. So we are building the image. Docker image first. अभी आप देखो कि मेरे डेस्कटॉप पे नहीं है इमेज। देखो कौन सी इमेज है, दो ही इमेज थी यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। ये मेरी लोकल है डॉकर डेस्कटॉप, मतलब ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपर इसको लोकली यूज करते हैं अपनी इमेज और इमेज को बनाने के लिए, कंटेनर बनाने के लिए, कंटेनर को मैनेज करने के लिए, डॉकर इमेज को मैनेज करने के लिए। दिस इज द लोकल। सो माय सी बिल्डिंग द इमेज। See, we are containerizing the image locally, remember. Background. What is the error? Let's see. Hmm. अभी मैं यहाँ पर to push result image into registry use see so guys even in this way you can see demo Java. So we'll detail though now. It's there, you can see. Okay, it's already there. So let me close this one first because I have removed this one. Now I will create again. See, simple, because it's already there. So now I created, means I deleted. Now I will create again this one, Docker build. ठीक है,
Yeah, so demo Java now it's created. See, okay, so uh, for the same application, of course, you can create multiple Docker images. Okay, but I already created. You can see, but what I wanted to tell you here that uh, in this way we can create the Docker image. Remember, so Docker image, if you see, we have created here. It's coming now. Okay, so we created the Docker image, and now when you run this Docker image, the container will be created. Remember, okay. So you can do in this way also. Like this is the Docker build we created. Now we will run this image. Remember, because if you try to run, you can run. But I will do. We will run. So we have built the image. Now we will run. Let's see. So I want to run this image on 8080 port number. Okay. Can you see this is my image? I will try to run this image 8080 and let's say I have no container. I will delete the all container. Let's see. Okay, so there is no container. Can you see? But we have Docker image. Okay, now I will try to run this Docker image on what is the image name? Demo Java and the port number 8080. You can use here 8091. What you have used it, just a minute. You have to check the Docker file 8091. We are exposing. Okay. So 8091 we have to use here. So see my container, it's running now. Now if you see, if you look at about the, now see this is in use, and now container. See, what is the container? Demo Java. Because if you look at, we have given here this, you can say, okay, and it's on running on which port number? 8091. So अभी मेरी एप्लीकेशन को रिटर्न नहीं कर रही है. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इट विल डायरेक्टली मूव टू दैट वन, ब्राउजर पे जाएगा. ठीक है, लेकिन अभी मेरी एप्लीकेशन क्या है, कोई रिटर्न नहीं कर रही, वहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रही, तो वी विल नॉट गेट एनीथिंग. जस्ट आई हैव नॉट रिटर्निंग एनी रिस्पॉन्स. ठीक है, सो इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग. रिमेंबर. ओके, तो आप देखोगे जब आपकी एप्लीकेशन अगर कुछ रिटर्न कर रही होगी तो आप मैसेज आएगा, जो मैसेज आप रिटर्न कर रहे होगे. ठीक है, ये हो गया मेरा. नाउ कंटेनर नेम इज व्हाट? डेमो जावा. अभी मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के लिए मैं
एक बार दोबारा रन करूं, ठीक है, और विद एनोदर कंटेनर के साथ, ये वाले कंटेनर के साथ, मतलब दूसरा कंटेनर मैं यहाँ पर रन करना चाह रहा हूँ, तो वो भी देख लेते हैं। डॉकर रन, अभी मैं इसमें डालूंगा कंटेनर 2। लेट्स सी, रन में दो चीज होती है, पुल करता है और फिर उसको रन करता है। देखो आई थिंक ये जो है, क्या कह रहा है ये, देखो ये कंटेनर 2 आ गया, आ गया। मैंने यहाँ पर कंटेनर 2 बनाया था यहाँ पर। Okay, we will see, not issue. And finally guys, we created the container with container name container 2। ओके, तो अभी आप इसको रन कर सकते हो कंटेनर को। तो लेट्स से अभी ये कंटेनर कौन सा, ये रन में है, इट्स रनिंग नाउ। डॉकर स्टार्ट and you have to provide the container ID, this one. So my Docker image is running on this container. तो कंटेनर 2 रन हो जाएगा, देखो आप, ठीक है। तो नाउ बोथ कंटेनर आर रनिंग, यू कैन स्टॉप। मैंने स्टॉप कर दिया, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम देखेंगे क्या रिमेनिंग है इसमें। ये हो गया गाइस, स्टार्ट स्टॉप डॉकर कंटेनर, यूज सम मोर डॉकर कमांड की हो गई हैं। लॉग इन टू डॉकर हब, डॉकर हब में लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉकर हब में हमने लॉग इन कर देते हैं अपन। तो लॉग इन है हमारा डॉकर हब में, आप देख सकते हो। जैसे मैं जाऊंगा यहाँ पर, ये लॉग इन है मेरे पास, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव, यू जस्ट क्रिएट द, यू जस्ट डू द रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन इट, ओके। फिर यहाँ से आप रिपोजिटरी बना सकते हो। मैंने बोला ना डॉकर हब में हम क्या कर सकते हैं, अपनी डॉकर इमेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ क्लाउड वेयर हाउस है ये, ठीक है, जिसमें हम अपनी डॉकर इमेजेस को शेयर कर सकते हैं पब्लिकली, और जो जो मेरी इमेजेस को यूज़ करना चाहे वो वहाँ से इमेज को पुल कर सकता है। तो अगर मेरे को कोई इमेज पब्लिकली शेयर करना है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल पुश माय इमेज टू डॉकर हब, सो एनीवन कैन यूटिलाइज माय इमेज, ठीक है। उस डॉकर इमेज को पुल करेगा और फिर वो पुल करने के साथ साथ अपने उस इमेज को रन करेगा डॉकर कंटेनर की मदद से, वहाँ एप्लीकेशन रन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला स्टेप लॉग इन टू डॉकर हब हो गया। फाइंड योर इमेज आईडी, अब मैं कौन सी इमेज को करना चाह रहा हूँ। जैसे ये रिपोजिटरी मैंने बना दी, आई विल यूज वन रिपोजिटरी, लेट्स से दिस वन, कोर जावा अंडरस्कोर डेमो जावा के अंदर मैं करूँगा। तो अभी इसके अंदर मेरी कितनी इमेज है देखते हैं। ये मेरी रिपोजिटरी है, ये यूजर नेम स्लैश रिपोजिटरी नेम, ठीक है। अब इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि हाउ मेनी इमेजेस इज देयर एनी इमेज और नॉट। You see, yes, one image is there, okay. The tag name, you can give the image version name, you can say, okay। तो ये है, देखो पोस्ट हुआ, ये दिखा देगा सारा डिटेल। इस पर क्लिक करोगे आपको
इमेज का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो मैंने अभी इमेज बनाई है यहाँ पर, मैंने जो इमेज बनाई थी ना अभी, क्रिएटिंग आई क्रिएटेड इमेज एंड आई रन द इमेज। ठीक है, तो मैं उस इमेज को डॉकर अप पर पुश करने वाला हूँ। तो देयर आर सम स्टेप। फर्स्ट वी हैव टू लॉग इन टू द डॉकर अप, find the image id which you want to push. Okay, then tag your image and push your image. So let's see, अभी मैं ये डॉकर डेस्कटॉप पे जाऊंगा, वहां देखूंगा कौन सी इमेज को करना है, इमेज पे जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं कंटेनर को पहले मैं एक काम कर दूँ, यहाँ से जो चल रहा है उनको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप हो गया, मैं इमेज पे गया, इमेजेस में। अब यहाँ पर मैं सपोज ये वाली इमेज तो वहाँ पर है, मैंने कर दी थी, कोर जावा अंडरस्कोर डेमो जावा, कैन यू सी। अभी आप देख सकते हो डॉकर अप पे, ये है ना कोर जावा अंडरस्कोर डेमो जावा। नहीं, ये तो वो है, रिपोजिटरी है। ओके, तो अंदर दिस रिपोजिटरी वी विल पोस्ट माय इमेज। सो अभी मैं देख लेता हूँ जो अभी अवेलेबल इमेज है वो कौन सी इमेज है, क्या है, विल सी। ठीक है, ये देखो आप इमेज में ही दिखा रहा है, लेयर्स, सारी इंफॉर्मेशन है जो जो आपको देखनी है, आप सब इंफॉर्मेशन मिलेगी इसमें। देखो जावा वर्जन कौन सा है, एंट्री पॉइंट कॉपी, ठीक है, इसके वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, फिर ये जो इन्होंने जो हमारी एग्जीक्यूटिबल जार फाइल थी उसको ऐप डॉट जार फाइल में इन्होंने वो कर दिया, कॉपी कर दिया। ठीक है, ये एक तरह का है। ठीक है, तो ये मेरी इमेज है। अभी मैं आई विल पुश माई ऑन इमेज। तो ये मेरे लोकल पर है अभी, ये वाली डेमो जावा इमेज इज नॉट देयर। ठीक है, सो आई विल टेक दैट इमेज नेम, लेट्स सी। तो अभी मैं टैग करूंगा इस इमेज को, क्या करूंगा, टैग करूंगा। तो फाइंड द इमेज फर्स्ट, docker images, we have to find ये इमेजेस है। देखो डेमो जावा, ये वाली अभी मैंने देखो अभी हुई है, ये करंट 85 ये वाला इमेज जो है डेमो जावा लेटेस्ट। देखो ये मैं डालूंगा, इसका कॉपी करके ये वाली इमेज को पोस्ट करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, तो इस वाली इमेज को मैं पोस्ट करूंगा। अभी ये वन डे वो है, ये वाली डॉकर अपर ये इमेज नहीं है। देखो अभी आप देख सकते हो, देयर इज नो इमेज, ओनली वन इमेज इज देयर, और जावा अंडरस्कोर डेमो जावा। आई थिंक वो मैंने कर दी है, बट यहाँ से अपने लोकल से आई थिंक मैंने डिलीट कर दी है। आई थिंक ये वाली है, आई थिंक यस, कोर जावा अंडरस्कोर डेमो जावा, ये इमेजेस नेम ही है। यस, इट इज देयर। ये आप देखोगे, ये है देखो 9E2, लेट मी सी, डिफरेंट वन नोटेशन। ओके, कोई इशू नहीं है, मैं अभी जनरल में जाके देखते हैं अपन अभी। मैं अपनी इमेज बना के भेजूंगा यहाँ पर, ये वाली देखते हैं अभी मैं कौन सी इमेज, ये वाली इमेज को डेमो जावा को करता हूँ। ठीक है, तो ये वाली इमेज नहीं है अभी, सी। ये देखो अभी मैं करूँगा, वी हैव टू टैग द आवर करंट इमेज विच वी वांट टू पुश। तो टैग होगा डेमो जावा लेटेस्ट, ये मैंने किया। तो यहाँ पर मैं डेमो कोर जावा अंडरस्कोर, ये वाली है, देखो आप देखोगे
कौन सी थी, कोर जावा अंडरस्कोर डेमो जावा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेटेस्ट की जगह पे यहाँ पे डाल दूंगा, वर्जन डाल देता हूँ 1.0.0। ठीक है, कोर जावा की जगह पे इस पे डालूंगा डेमो जावा, और यहाँ पर भी लेटेस्ट की जगह पे 1.0.0। एंड टैग जब हम करते हैं, टैग हमें करना पड़ता है पुश करने से पहले, क्योंकि भाई जो हमारी इमेज है जिसको हम पुश करना चाहते हैं, वी हैव टू टैग दैट इमेज, बिकॉज टैग में मतलब आप बोल सकते हो इसमें आपको वर्जन बताना पड़ता है, बताना पड़ेगा कि लेटेस्ट है या फिर अगर आपके पास कोई वर्जन है उस इमेज का आप डाल सकते हो। ठीक है, तो टैग करना पड़ेगा अलोंग विद योर, ये आपका, आप बोल सकते हो ये क्या है, यूजर नेम। ठीक है, ये यूजर नेम है, तो अभी मैं कर देता हूँ आपका यूजर नेम के साथ जाएगा ये, सॉरी, हाँ यहाँ पर लेटेस्ट की जगह पे ये रिपोजिटरी दिया है मैंने, सॉरी, यूजर नेम एंड कोर जावा अंडरस्कोर डेमो जावा, ये रिपोजिटरी नेम है, इसमें मैं डालूंगा अपना 1.0.0, और इसमें 1.0.0 ये वर्जन दे दिया। ठीक है, और ये डेमो जावा मेरा वो हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स सी, तो टैग में हम एक्चुअली इमेज के साथ में अपना वर्जन डाल रहे हैं कि कौन सी वर्जन की इमेज है, क्योंकि आप जब पुश करोगे तो आपको वर्जन तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सी 1.0.0 या 1.0.01, 1.0.02, 1.0.03, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो लेटेस्ट जो भी है, तो इससे पता पड़ जाएगा कि भाई किस सीक्वेंस में आपकी जो इमेज है, डॉकर इमेज है, वो किस सीक्वेंस में आपकी बन रही है। एप्लीकेशन में आप जब जब चेंज करोगे अपने, हर हर बार आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए नई इमेज बनानी पड़ेगी और उसको पुश करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ओके, सो ये मेरी, अभी वी आर जस्ट टैगिंग दिस इमेज विद अवर वर्जन। ठीक है, जो भी लेटेस्ट वर्जन है, अभी मैंने अपनी एप्लीकेशन में चेंजेस किए, जस्ट अंडरस्टूड, एंड फिर मैंने बिल्ड किया एप्लीकेशंस को, फिर बिल्ड के बाद मैंने डॉकर फाइल बनाई, जो इंस्ट्रक्शन मेरे को डॉकर फाइल के अंदर रखने थे। फिर मैंने क्या किया, आप देख सकते हो क्या, नो सच इमेज, लेट मी सी, अभी मैं ये लेटेस्ट करके देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, सी यहाँ पर क्या होता है, यस, बन गई ये इमेज भाई, टैग हो गई, ये देखो अभी ये टैग हो गई है, ये वाली देखो अभी आई है, अभी जस्ट इसमें आ गया है। ठीक है, अभी या नाउ डॉकर पुश, once you tag your image you can push your image। push this one, यहाँ पर डाल दो push your image, क्या है लेटेस्ट है, यहाँ पे मैंने डाला था कौन सा, लेटेस्ट। लेटेस्ट, ठीक है, लेट्स सी,
देखो ये मेरी इमेज पुशिंग हो रही है, ऑथोराइज्ड इशू हो गया क्या इसमें? Okay, already exist. Yeah, yeah. So let me see. Layer already exist. तो अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पर? See first. How many images is there? It's already there. Okay. तो अभी मैं लेटेस्ट की जगह पे यहाँ पे डालूँगा. ये देखो अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट की मतलब क्या हो गया, इसमें ओवरराइड हो गई है 11 मिनट्स, पुरानी वाली से ओवरराइड हो गई है. मैं शी ऑल करूँगा मैं, लेट्स सी कितनी आ रही है यहाँ पे. Less than a day. Okay, so just a minute. In this way, let me show you here. This one, demo java latest. Demo java latest. You tagged. Now we will push. Demo java. Demo java. Let's see. So I will create the repository. Uh, yeah, so already it is there actually. So what I will do, I will create the image under this repository. So let's see. I will push my image under this repository. This repository does not have anything. Okay. So, thing it thing is, previous repository have the same image. So the video length is already large. So I will not create again the Docker image, and so there are some steps we have to follow. So because I was we were able to push the image here, but the my previous image get overridden. 4 minutes ago, this image has been pushed. So, but my previous image also was having the latest.
Okay, that my previous image also was having the same name, so that previous image got the overridden with my latest one. Okay, so because I created the image with latest here, so what I will do, I will use the different repository. So this is my repository, you can say. I will inside the repository and I will post the image inside this repository. Let me show you. So we, and there is an option create repository, you can create new one, but I have already this one. About 2 months ago I created, but I have not post any image here. Spring underscore demo. So let me show you here. I will post my image. Which image I want to push? I will push my this image, this demo Java. Okay. And yeah, you can see what is the repository name? Spring underscore demo. Let me see here. Spring underscore demo. Okay. Spring underscore demo. Okay. And what is the tag name? Latest. Okay. Remember. And this is the repository latest demo Java latest. Let's see. Yeah, it's been tagged now. Now I will push. You can say this is spring underscore demo. So I've tagged with demo Java. Now my image name is demo Java. You know, tag with latest. Okay, so here spring spring underscore demo. Now I'm pushing under this repository spring underscore demo, which is spring underscore demo. It's not, there is no any image. Okay, we'll see. Tagged is not exist. Demo Java spring underscore demo. Demo latest. Latest. Yeah, now it's been posted. We'll see again. Yeah, now it's been done now. So this, you see, under this, just have to refresh and see the image. So we have less than image. See, we have pushed our image. Okay. So the tag
So guys, activity we have done almost guys. So and you can put this is a CV and you can copy, and if you want to pull this image, you just click on it and it will show you the option also. Okay, so this is the use of Docker Hub. Now you have pushed your image under this repository, and from here you can pull your image. So this is the okay. You can pull this image. If you want to pull it, you can pull it. So latest syntax latest. Okay, minutes. So thank you guys. Thank you so much. We have done all the question. It. So it will be helpful guys. Okay, and this Docker session will be helpful. It is very important guys. So thank you so much.